Hello, hello, hello. Mic testing. Hello, 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 hello. Mic testing. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello. Hello, hello, hello. Mic testing. Hello. Coming up with an all-important cricket match of Dandosa Premier League. Shala Sports Pansla taking on the formidable side of Vadura Sports Club. And this afternoon the toss was won by the skipper of Vadura Sports Club and he opted to bowl first. All set to go for this mouth-watering clash, a blockbuster of a match between the two sides. We got the two openers of Shala Sports Pansla into the centre. All set to go now. You can see everything on their respective positions. The bowler is marking his guard. He is getting ready to bowl. The first ball of the game. Wicketkeeper is right up to the stumps. And to his right side, that wideish flying slip, we have got one man inside the ring. And four inside the ring on the offside as well. That is wideish long on. Short scale again, fine leg in place. Both the right-handers from the side of Shala Sports Pansla are at the centre, and here is the first ball of the match. Abid will have to wait and watch who is at the strike. First ball over the stumps he goes, right on the money. It's a better line first up as the batter watches the ball and lifts his bat, lets it go into the gloves of wicketkeeper. Wahid and Lun Abid are the two strike batters from the side of Pansla. And it is Shakir Wani who is starting the proceedings for Vadura Sports Club. As he goes for the second time, he lifts it in the air. Three fielders are converging. Who is going to take the catch? And he puts it down. It was miles up in the air and was a skier. Should have been taken. Two fielders were settling under the ball. He got both hands straight. But unfortunately, it goes down and off the very second ball of the game.
Wahid gets the reply and he gets the life. His opener is a count. It's 1 for none, but it could have been wicket number 1 in over number 1 for Shakir Rani. But a catch goes down. He spills an easy catch. The fielder at extra cover, who was stationed under the ball, even though the skipper Shaukat was there. He got both hands to the ball but wasn't able to cling on. And early reply for Wahid. Next ball. This has been clipped away fine. Gets it in the gap. Wide off that fine leg fielder. There is no protection at all, and the ball races away into the fine leg boundary for 4. And it's Lone Abid who gets off the mark of the very first ball. And it is always a positive sign for a batter. You get into the confidence when you face the first ball and you get it into the boundary. It's 5 without loss as Shakir goes again. Cuts away. It's a furious cut shot and no chance for backward point at all. And once again the ball rockets away into the fence for 4. Shot in wide and treated with disdain. Beautifully played. That was gorgeous from the bat of Lone Abid. Width provided and he cashes in, gets back-to-back boundaries now. That first ball was pattern line. It was pitched up right up to the batter. It was a dot on the very second delivery. He could have got a wicket, but unfortunately the catch was put down. Then it is Lone Abid who's onto the strike. He gets boundary of the very first ball, and then second one was absolute hit-me delivery, and he gets it wide off the backward point fielder for 4. Next one on the pads again, helps it away, goes down to the final leg boundary for 4. It's hat-trick of boundaries in over number 1, and Lone Abid is on the charge here. Way down the leg side, a hit-me delivery, or we can say a terrible delivery that was. He just tucks that one fine. He just needed to tickle that one. Even fine leg who was inside the ring had no chance at all, and it races away into the fence for 4. Hat-trick of boundaries in over number 1. Final ball coming your way. This one is a good delivery. He comes back strongly. He just pulls his length back and bowls a back-off length delivery, which forces Abid to be at his crease. Off the back foot he goes and just tucks it on the onside. Shot mid-wicket is in play. As he fielders the ball, there is no addition to the total. Done with over number 1. They are 13 without loss. A good start first for Shala Sports Panzla, even though it could have been a worst possible start for them had the catch been taken off the very second ball. It went down and Wahid, who got a life, will have to wait and watch. Can he make it big today? You've been given the life. As Bilal will operate with the first ball of his fresh over. It's wide outside at off stump. He was trying to go big, and he gets beaten this time. There is no connection with ball at all. Wicketkeeper behind the stumps grabs it quite easily. So there is no addition to the total. 13 without loss it is after 1.1. You need to be cautious, you need to be quick in the field. Though you always say that catches will you matches. It could have been a pressure situation for them had the catch been taken. But you'll have to forget those things. And now, what a shot that is. Absolute skyrocket from the bat of Wahid as he goes down and covers it to a backward point. Went miles up in the air as the ball sails away, way back into the crowd for 6. Dancing down the wicket, you can see no fear at all. Meets the ball at the full, goes right up to the pitch of the ball and absolutely hammers that one. That was an absolute gigantic 6 from the bat of Wahid. We can say rubbing salt to the wounds as well. Ultimately, when that catch went down, you can see the pan in the eyes of the ball. He did all that hard work to get that wicket, and now he has been hit for a 6. Terrific strike that was. Just leaving the crease and playing that fearless cricket, meeting the ball right on the full. You can see the distance the ball travelled. It went quite a distance. I can say a huge 6 that was from the bat of Wahid. He moves on to 7 of 4 as Shala Sports Panzla clearly making a statement here with 19 without loss in over number 2. And in the meantime, Mudassir Mohideen has been the first viewer is commenting on this live broadcast, and thank you, brother, for joining it. He's watching us from Chatlura Rafiabad with Humaira.
And Sajjad Sufi is also watching this game. He wants to know about the venue, and it looks quite majestic, a lush green outfield as he can see. And he's watching from Bandipora, and it is the sports field of Dandu Sarafiabad, where this majestic venue is hosting Dandusa Premier League, and it's an all-important game, a mouth-watering clash between the two sides. Shala Sports Spanzla taking on Vadura Sports Club. A good start first up for Wahid and Lun Abid, who is on 4, striking at 300. Next delivery just wide outside off stump, and he's trying to keep it outside that reach of the batter, and he's trying to swing on each and every ball, and he lifts his bat and lets it go into the gloves of wicketkeeper at the halfway stage of over number 2. Stand at 19 without loss. Bilal Javed, operating in his first, has conceded that 6. My word, that was an absolute skyrocket. A biggie from the bat of Wahid, dancing down the wicket. And Lon Javed in the meantime has also joined us. Walaikum salam, and he is watching from Shalkut, and Paris Sajjad watching from Kitardaji as well. Thank you for joining us as we request you all to share this live broadcast. He goes again. This is in the air. We'll have to wait and watch. It's 6 more. It's totally fearless approach with the bat. Wahid needs no second invitation when he gets his ball into the zone. And once again, you can see he leaves the crease, exposes all his stumps, knowing that the fielders are inside the ring. And even it doesn't make any difference. You can see the ball traveling quite a distance again. He's got 2 sixes in this over. A dot, 6, then a dot again, and now 6 again. 12 off this over until now. 25 without loss. They're running away with it, and straight away trying to put pressure on the bowler. 12 conceded of 4. As Bilal gets ready once again. Now that cover fielder goes down to deep cover, and we have long gone as well in place as he goes with ball number 5. And this one is in the air. This could be trouble. Wahid has to depart. He was trying to go big again, trying to replicate the same shot, but this time doesn't get the timing right, and he gets it at the upper half of the bat. Went in the air. As you can see, good placement of the fielder. He was targeting that backward point, that point area, continuously got back-to-back 6s out of that region, but this time the skipper got that fielder right at the edge of the boundary at the deep cover region, and he completes the catch. First one goes down. He was looking dangerous in this over, absolutely dangerous. He was trying to take on the bowler, trying to put him off and trying to put pressure on him, but perishes against the run-up play. He got 2 sixes, and nonetheless I can say it was a clear ban frayed by the batter there. He got 2 sixes, and there was no need to go big again, even though the fielder was stationed there. And I guess he didn't see the fielder who was right at the boundary. And once again trying to replicate the same shot, but perishes this time and has to depart. 25 for the loss of 1. Bilal Javed breaks through, and he gets first one for Vadura Sports Club. 25 for 1 it is, and it's Irfan who makes his way at number 3. It's an all-important position. Mostly we can say always a backbone of the side. It's always a backbone of the batting order. The number 3 position is in. 25 for 1. And Danish Lun watching us from Khushipura. Walaikum salam. Dar Khurshid and Mumtaz Ahmed have been the part of live broadcast, and we have been joined by some beloved viewers of Mansoor Decoration at Rafiabad. Once again in the air, got the outside edge. Luckily, just short of that wideish slip fielder. Oh, for a moment to the batter, his heart could have been in his mouth. That wideish slip fielder, Mohsin, I guess, was the man, and the ball just dropped short of him, and he fielders the ball on the bounce. Done with over number 2. 25 for 1. As Mumtaz Ahmed is watching from Dandusa, and Danish Lun sending in best wishes for Basit and Lun Abid, who started in a positive way, in a positive manner. He got 3 boundaries, hat-trick of boundaries in over number 1. He's on 4. He's striking at 300 as he gets ready to face the first ball of the fresh over. Nicely done by the batter. He covers the line of the ball, nicely works it away on the onside, and will get a single. Will be at the non-striker's end. And that is the beauty of cricket, even though you lost to that wicket now.
whenever you get the bad ball, you just try to hit that away, the shorter dimensions on both sides of the wicket. But those singles and doubles have that equal importance. You rotate the strike and you try to put up a good partnership for the team. And Irfan faces the Dex delivery. Good nut bat was just shaping away. You can see pitching on that corridor of uncertainty. And he was caught in a tangle, or we can see he was double-minded, whether to play off the front foot or off the back foot. At this time he gets beaten. Luckily that he didn't nick the ball. It was close to the outside edge. Goes into the gloves of wicketkeeper. Shakir goes again, short and wide outside the off stump. He cuts it away, but he finds his fielder at backward point. Good looking shot that was. Finds just that middle of the bat. Always a good feeling for the batter, you finding the middle. But you have to place those shots. You have to find those gaps to get those desired results. Third over is in progress. Next delivery. This one jumps off the surface, catches the batter's glove, and it goes couple of bounces down to that flying slip. There is Mohsin, who is guarding that area. He's patrolling that area. Still that deep point fielder outside that 30-yard ring. And that was a great move by the captain when Wahid was going hammer and tonk. This time guides it away nicely in the gap down to third man, and will be off the mark with that. A sigh of a relief for Irfan here. Finally gets off the mark on his ball number 5. Takes the score to 27 for the loss of 1. It will be Abid on strike to face final ball. Wide outside off stump, nicely places it away and gets it down to that deep cover fielder, and there will be a single. 27-28 for the loss of 1. After the over number 3 has been done, after bowling first, it has been, we can say, a 50-50 start for both the teams, as Abid and Wahid were going absolutely hammer and tonk. And but this time he gets a single. 3 overs done. It's 28 for the loss of 1. शुक्रिया फिरदौस। तो चौथे ओवर की पहली गेंद के साथ नए गेंदबाज ऑफ स्टंप से बाहर थोड़ी उछाल लेती हुई गेंद, और गेंद आखिरी लम्हात पर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। मीर फिरदौस हमारे साथ जुड़े हैं गुंड करीम खान वतरगाम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस मैदान के साथ इनकी बचपन की यादें जो है वो जुड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। 27 स्कोर है शाला स्पोर्ट्स पांजला का 1 विकेट के नुकसान पर। बिलाल जावेद है बॉलिंग मार्क पर। अगली गेंद के साथ अच्छी गेंद अंदर की जाने आती हुई हवा में, और सीधे स्लिप में फील्डर के हाथ में, देखना होगा, और आउट करार दिया गया है। आउट करार दिया गया है। आपको रीप्ले में जरूर दिखाना चाहेंगे। ग्लव्स को छूने के बाद सीधे गेंद स्लिप में फील्डर के हाथ में। हालांकि बल्लेबाज जो है दिखा रहे थे कि उनके जो है बाजू पर गेंद लगी, लेकिन अंपायर की जानिब से इशारा आता हुआ उन्हें आउट करार दिया गया है। तो आउट होकर पवलाइन वापस जाते हुए यहां पर बल्लेबाज। ये दूसरी विकेट गिरी है 27 के स्कोर पर। वाडोरा स्पोर्ट्स की जानिब से बिलाल जावेद के खाते में जाने वाली पहली विकेट। 27 स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर शाला स्पोर्ट्स पांजला का। आपको रीप्ले में दोबारा से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से उछाल लेती हुई गेंद सीधे स्लिप की जानिब गई, और स्लिप में फील्डर ने कोई गलती नहीं की, जिन्होंने एक आसान सा कैच लेकर, ये आप रीप्ले में देख सकते हैं रियल टाइम में। जी बिल्कुल, ग्लव्स को छूने के बाद स्लिप की जानिब गेंद गई। दोबारा आपको दिखाना चाहेंगे। हालांकि बल्लेबाज लगातार दिखा रहे थे कि गेंद जो है बाजों पे लगी है, लेकिन हम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है यहाँ से कि गेंद जो है सीधे, थोड़ा हम जूम करेंगे, थोड़ा जूम करके इसे दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम जो है थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या माजरा यहाँ पे बना। ये हम थोड़ा जूम करके दिखा रहे हो। अब मैच जो है दोबारा से, इस मरतबा पैड से टकराई गेंद, हल्की सी अपील, लेकिन नकारा इस अपील को अंपायर ने। लेग स्टंप को मिस कर रही थी गेंद, ऐसा इशारा दिया। सिराजुद्दीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुनायतू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश लून भी हमारे साथ जुड़े, वालेकुम सलाम। मंसूर डेकोरेशन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खान मेहरू हमारे साथ जुड़े हैं। एजाज टेलीकॉम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगली गेंद के साथ बिलाल जावेद, इस मरतबा गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड की जाने, हालांकि पूरी तरह से बल्ले पर गेंद आई नहीं। शॉर्ट के लेग से फील्डर आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं।
आकिब आए हैं नए बल्लेबाज लोन आबिद का साथ निभाने के लिए। लोन आबिद ने 13 रन बनाए 5 गेंदों का सामना करते हुए, और बिलाल जावेद ओवर में अगली गेंद के साथ। बिलाल जावेद अगली गेंद के साथ और सामना करेंगे उनकी गेंद का आकिब। आकिब ने 2 गेंदों का सामना किया, अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए आकिब। बिलाल जावेद की गेंद विकेट छोड़कर गेंद को खेलने की कोशिश नाकाम। गेंद जो है बल्लेबाज को पैड को छूने के बाद विकेट कीपर आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। 27 स्कोर है 2 विकेटों के नुकसान पर। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया लाइव नशरियात में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीर फैयाज, इशफाक अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। मीर फैयाज हमारे साथ सोइन रफियाबाद से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जावेद अगली गेंद के साथ ऑप्शन से बाहर, गेंद को खेल दिया, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद गोली की मानंद बाउंड्री लाइन पार 4 रन के लिए। आपको रीप्ले में दिखाना चाहेंगे ये चौका आता हुआ आकिब के बल्ले से और खाता खुलता हुआ आकिब का, जबकि मजमूई स्कोर शाला स्पोर्ट्स पांचला का 31, 2 विकेटों के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल जारी। एफएस आजिम हमारे साथ जुड़े हैं, नाइस वीडियो क्वालिटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इशफाक अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सिराजुद्दीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मीर फैयाज सोइन प्रीमियर लीग के हवाले से लिख रहे हैं कि सुपर 16 का आगाज़ होगा सोइन प्रीमियर लीग के तहत मार्च के महीने में। और बूम बूम दानिश भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरबाज आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। अरबाज पारी का 5वां ओवर फेंकेंगे। 4 ओवर का खेल हो चुका है, 31 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। अरबाज लंबे बॉलिंग रनअप के साथ ऑफ से बाहर, गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड की जानिब, लेकिन मिड ऑन पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। इजाज टेलीकॉम और बूम बूम दानिश बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह डंडूसा प्रीमियर लीग के तहत खेला जाने वाला एक अहम मुकाबला वाडोरा स्पोर्ट्स और शाला स्पोर्ट्स पांचला के माबैन, और शाला स्पोर्ट्स टीम जो है वो पहले बल्लेबाजी कर रही है। इसी बीच अरबाज की गेंद इस मरतबा उछाल लेती हुई गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहा था आबिद ने। गेंद जो है बल्ले के निचले हिस्से को छूने के बाद शॉर्ट स्क्वेयर की जानिब गई, जहां पर गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। हमारे साथी वसीम मुजफ्फर हमारे साथ जुड़े हैं सऊदी अरबिया से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शहनवाज साहबा शहनवाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डार मंजूर के साथ, डार मुजफ्फर के साथ। अरबाज 5वें ओवर की अगली गेंद के साथ आबिद के लिए इस मरतबा हवा में खेला गया स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे जाने की कोशिश में, देखना होगा, और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब एक टप्पा खाने के बाद गेंद को रोकने में कामयाब। इस दौरान दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। तो 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 33, 2 विकेटों के नुकसान पर। बिलाल परे मेरे होम टाउन से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दार मुजफ्फर भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथी वसीम भी हमारे साथ जुड़े हैं, वसीम मुजफ्फर, और एजाज टेलीकॉम से हमारे साथ कुछ दोस्त जुड़े हैं। आबिद लोन जो है 15 रन पर खेल रहे हैं, सामना करेंगे एक मतलब फिर अरबाज की गेंद का। अरबाज गेंद की लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर सफाई के साथ रोक नहीं पाए और गेंद सीधे फाइन लेग बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। यह चौका आता हुआ और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब 38 हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। अरबाज पारी का 5वां ओवर फेंक रहे हैं। मीर दीन हमारे साथ जुड़े हैं, रियाज अहमद पांजला से हमारे साथ जुड़े हैं, रफीज फ्रॉम पांजला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरबाज लोन आबिद के लिए ओवर में अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट ऑप्शन से बाहर, जगह बनाकर खेलने की कोशिश, लेकिन अंदर की जाने आती हुई गेंद तेजी के साथ सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। लोन फिरदौस पातुसा से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। 38 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर शाला स्पोर्ट्स पांचला का, और यह पारी का 5वां ओवर जारी है वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से। अरबाज है बॉलिंग मार्क पर। अरबाज लंबे बॉलिंग रनअप के साथ एक मरतबा फिर सामना करेंगे लोन आबिद, जिन्होंने 15 रन बनाए हैं। ऑफ स्टंप से बाहर और बल्ले का अंदरूनी किनारा स्लिप में फील्डर के बिल्कुल करीब से होती हुई गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए।
आपको रिप्ले में जरूर दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल करीब से होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन्स के लिए। हालांकि बाएं जानिब डाइव लगाकर गेंद को जो है कैच करने की कोशिश की थी, लेकिन कैच ले नहीं पाए और गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री को छूती हुई 4 रन्स के लिए। मीर दीन हमारे साथ बलहामा से जुड़े हैं, लोन फिरदौस पातूसा से बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमें ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से ज़रूर जो है आगाह कीजिएगा कि आप तक हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। अगर इसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश होगी तो बेहतर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। 42 स्कोर, 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 42 मजमूई स्कोर शाला स्पोर्ट्स पांजला का इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए। लोना आबिद 11 गेंदों का सामना किया, 19 रन बनाए, जबकि आकिब ने 4 गेंदों का सामना किया और 4 रन बनाए। अरबाज का पहला ओवर खासा महंगा रहा, 11 रन आए इस ओवर से। और अब देखना होगा छठे ओवर में किस गेंदबाज को बुलाया जाएगा वाडोरा स्पोर्ट्स की जानिब से। ये डंडूसा चैंपियंस ट्रॉफी का एक अहम मुकाबला इस वक्त जारी, और देखना होगा कौन सी टीम जो है इस मुकाबले में फातिह बनकर सामने आएगी और दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। शाकिर वानी को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। शाकिर छठे ओवर की पहली गेंद के साथ आबिद के आकिब के लिए। गेंद की विकेट छोड़कर गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहता, गेंद थोड़ी रफ्तार मुझे लगा कि कम रखी इस गेंद पर शाकिर ने, और गेंद जो है पड़ने के बाद काफी देर से विकेट कीपर के दस्तानों में। छठे ओवर की दूसरी गेंद के साथ शाकिर, छोटा सा रनअप, 10 या 11 कदमों का रनअप ओवर द विकेट। गेंद की और इस मरतबा सीधे बोल्ड हो गए हैं। हालांकि गेंद को खेलना चाहता जारहाना अंदाज से, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से को छूने के बाद सीधे स्टंप्स को छू गई, और इस तरह से आकिब की इनिंग का खात्मा और तीसरी विकेट गिरती हुई शाला स्पोर्ट्स पांजला की। शाला स्पोर्ट्स पांजला की ये तीसरी विकेट गिरी है। बट बशीर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरे होम टाउन से। तारिक अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं, रणवीर भी हमारे साथ जुड़े हैं, शाला स्पोर्ट्स पांजला के लिए अपना प्यार भेज रहे हैं। तारिक अहमद भी जुड़े हैं, मीर दीन हमारे साथ जुड़े हैं, फैसल इब्न फैयाज हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर 3 खिलाड़ी पावरलाइन वापस जा चुके हैं शाला स्पोर्ट्स पांजला के 42 के मजमूई स्कोर पर, और ये छठे ओवर का खेल जारी है। शाकिर वानी अपना तीसरा ओवर फेंक रहे हैं, अभी तक 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। शौकत अहमद भट्ट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर अब जो है नए बल्लेबाज आए हैं, आरिफ लेफ्टी आए हैं नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज, और सामना करेंगे शाकिर वानी की गेंद का। अब देखना होगा क्या उनके लिए ओवर द विकेट गेंदबाजी होगी या फिर राउंड द विकेट। आशिक हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं, आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशिक हुसैन हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं, और फेसबुक पर आप ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये बराह रास्त आप 2 जगह पर जेके स्पोर्ट्स डिस्कवरी यूट्यूब और ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क फेसबुक पर देख सकते हैं। अगली गेंद शाकिर के ऑप्शन से बाहर, यहां आरिफ लेफ्टी के लिए, और उछाल लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। उजैर बशीर वानी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बशीर अहमद वानी फ्रॉम रोहमा रफियाबाद। आशिक हुसैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद, और इस मतबा आरिफ ने गेंद को खेल दिया है, उस ओवर देखना होगा फील्डर मौजूद, 1 रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन मुकम्मल होता हुआ। तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने ये रन मुकम्मल किया, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 43 हो चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर। शाला स्पोर्ट्स पांजला का छठे ओवर का खेल जारी है। शाकिर वानी है बॉलिंग मार्क पर, और ओवर में 5वीं गेंद के साथ सामने है लोन आबिद के लिए लंबे बॉलिंग रनअप के साथ शाकिर। गेंद के कदमों का इस्तेमाल, पहले से ही 2-3 कदम आगे गए, लेकिन आखिरी लम्हात पर गेंद जो है काफी ज्यादा पीछे पिच किया गेंद को शाकिर ने, और उछाल लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। आशिक हुसैन जानना चाहते हैं कि कल किसका मैच है, अभी हमारे पास जानकारी नहीं है, देखना होगा, आपको जरूर जानकारी देंगे। अगली गेंद ऑप्शन से बाहर, अच्छी गेंद काफी ज्यादा अंदर की जानिब आती हुई, और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इस तरह से 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 43 स्कोर शाला स्पोर्ट्स पांजला का 3 विकेटों के नुकसान पर।
background is gay. So we're done with the fielder restrictions. 6 overs have been bowled until now. You can say the session to the side of Vadodara Sports Club, the way their bowlers reacted, even though it was a downpour couple of days before, but now you can see the wicket has got some spice in it. There is that pace in the wicket. The bowlers are generating that pace and bounce, which has troubled the batters of Shala Sports Pansla, and that's why you can see the 3 wickets down already. Brutal delivery that is, and wraps him on the thigh pad, then went in the air, caught into the gloves of wicketkeeper. A splendid display of bowling, a fantastic display of bowling until now has been displayed by Vadodara Sports Club, their bowlers. In those 6 overs, they didn't let the batters to run away or didn't let the batters to score freely. And see Abid is on 19 of 13, and Arif Lefty who's just arrived to the crease is a newcomer to the crease. So it will take some time for him to get used to the conditions. You have to assess well. Next ball wide outside the off stump, and he goes cross-batted on the onside and will get a single. And he moves on to 2 with that 44 for 3. But after winning the toss, as deciding to bowl first, it was a good toss to win for them, as they wanted to get to use those conditions well, the pace and bounce the wicket has on offer, and the bowlers have responded very, very well. I can say living up to the expectations of the skipper. The bowlers are bowling good lines and lengths. This is shot and hits him flush on the helmet. That was brutal from the bowler, and Arbaz, who is generating lot of pace here. As I said, the wicket has got bounce, the wicket has got pace. He can trouble the batter. A nasty bouncer that was, and hits Lone Abid flush on the back part of the helmet. This could be very, we can say, disheartening for a batter, and it sometimes gets you out of that game as well. You lose your concentration and you're being hit on a head, and luckily he is still there. He is still okay. Next one as he works him away on the onside, down to long on, and there will be a single. It's 45 for 3. It has been a great display of bowling until now. With Bashir, it is the sports field of Dandusa Rafiabad. Qayyum Dar is also watching for us, and let me once again tell you this afternoon, the coin went in favour of Vadodara Sports Club, and it was a good toss to win for them. We still have got that slip in place because there is enough pace, there is enough bounce. This time he guides it with an open face off the bat, finds his point inside the ring, and there is no possibility of a run at all. And very never number 7, you can see it is just below 8 runs per over, 7 runs per over. And it is Umar watching, and Mir Javed, walaikum salam, both the viewers who have represented. Umar is the wicket-keeper batter of Lone Brothers Balam. I guess they won the first game here. And Mir Javed is leading the side of Shamir's Cricket Club as well. The final ball coming your way. Narbaz bowls it wide. He gets the outside edge as it flies over third man boundary for 6. When you swing it hard, so you can get enough power behind the shot. Even though it was an outside edge, but still manages to get that over third man. Courtesy to the short boundaries on both sides of the wickets, and he gets a 6. Was not a convincing one, but he will take it as a batter, no matter where the runs come from. But you need runs to get going, and he gets 6, half a dozen off the final ball. Done with 7:51 for the loss of 3. With Tariq Ahmed also watching the game, also enjoying the game. And let me remind you once again, you're watching this game live and exclusive on both the platforms, on YouTube and Facebook as well. On Facebook, you're watching it on Global News Network, and you can enjoy it on YouTube as well on JK Sports Discovery. So tune in to Facebook and YouTube to enjoy each and every piece of it, to enjoy each and every ball of the game. And it has been a good contest between bat and ball, or I can say the bowlers until now have been quite dominant, the way they're bowling, the way they're using the conditions, the way they're forcing the batters to commit those mistakes or to don't let them to play off the front foot. Until now we've seen the batters completely going off the back foot, not using the crease as well, even though although Abid tried his level best to use the crease, but that spice in the wicket, the pace and bounce on the wicket, has been able to
understand that, even though he came as an opener, he came as a strike batter. Until now, he is on 20 or 15. Once you get well set, once you assess the conditions, you get used to the pace and bounce of the wicket, and you can open up, or you can play those shots which you have in your book. And you know about Abid, he is a super talented batter. He's a star batter of the lineup of Shala Sports Panzla. In the meantime, Mir Deen is watching the game, and he is giving his instincts that you need to play outside the crease, or you can have to manufacture your own room, have to get your own room, so that you can counter that pace and bounce as well, which is available in abundance on this wicket. And Zahid Ali also mentioning that you just get outside that line of the ball and then try to hit those balls to counter that pace and bounce. And for the first time, spin has been introduced, and now the skipper brought back into the attack. And in over number 8, he is getting ready here. As you see, the fielder restrictions are done. We just have 1, 2, 3, 4 fielders on the offside inside the ring, and no one on the onside. So plenty of protection, lot of protection on the onside at the boundary ropes, with wideish long on, deep mid wicket, and wideish long leg. And then on the onside, he has got that short third man, that gully, point, and extra cover. Whereas long off and deep cover are patrolling the boundary line. It is Stubborn Cheyenne. As watching, is mentioning that is commenting that is it the village level tournament. Yes, it is a village level tournament. It is a prestigious, you can say, edition of Dandusa Premier League. But let me clear one thing, that it is only played once in a year. So most of the viewers, most of the cricket lovers do enjoy playing here. And in the meantime, Sheikh Fahim, he is also enjoying this game. He is also watching this game. 52 for the loss of 3. It is Shaukat Naiku. So he is leading the side of Vadodara Sports Club. Spalling this time for the first time in this game. In his first ever, has conceded just 1. It's 52 for the loss of 3. Sheikh Fahim is watching this game and do inform us. You back into the valley or staying still there at Haryana? Do comment. Next one, a good delivery, wraps him on the pad, appealing, but no, says the umpire. He wasn't interested at all, but to me it looked very close. I will have to wait and watch. The main question was, where did it pitch? Did it pitch in line of the stumps? You can see it was mighty close to the stumps as well. And that was worth a shout too. It was a loud shout of LBW. But no, says the umpire. He declines the appeal. He wasn't interested at all. Next delivery, gets the outside edge. You can see he is dancing at the moment. If we talk about the batter, Shaukat Naiku is getting that turn. You can see the ball pitching on that middle and leg stump. And turning away from the batter, was trying to push it off the back foot. Gets an outside edge. A lucky escape, a close shave for the batter as it lands right in front. Mohammad Salim, one of the star all-rounders of Senegal, is watching the game with Butt Saqib and Sheikh Fahim. Thank you, brother, for providing the information still in Delhi. Thank you for joining us. Next delivery, cuts it uppishly, and it goes down again. That was an absolute dolly at short third man. Straight in and straight out. I guess it is the catch number 3 of the day which has gone down. A straightforward chance, or we can say very, very simple chance that was. He's trying to go off the back foot to open up on the onside, gets an outside edge. Straight in and straight out. Very unlucky for the bowler. Got a feel for Shaukat Naiku. He did all the hard work. But the catch goes down, and the final ball, this has been nicely worked away on the onside by Lon Abid. But there is protection at the boundary. He will get a single. And done with over number 8 as well. It's 54 for the loss of 3. It could have been a worse situation for the side of Shala Sports Panzla. It could have been a couple more wickets had those catches been taken. But there is the part of cricket as well. But you'll have to up the standards of the fielding. The department, you need to assess that department as well. 3 catches down, 1 at extra cover, 1 at slip, and now 1 at short third man as well. As Zubair Tantri mentioning that you need to be technically sound there. You'll have to win the match. As a technically sound batter,
He can always counter that pace and bounce. Suhail Mukhtar, Rafiabad Panthers, some viewers watching, and Mirdeen as well. Sheikh Fahim, thank you brother for joining. And when you're coming back, do mention as well, as we welcome you here on the sets of Global News Network. शेख फ़हीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा मेरी जानकारी में है कि पिछले साल जो इसी मैदान पर डंडूसा चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हुआ था, तो पहले जो है बल्लेबाज बने थे जिन्होंने यहाँ इस मैदान में हाफ सेंचुरी मुकम्मल की थी, गलबन सेंचुरी मुकम्मल की थी, जुबैर तांतरे। बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल मुख्तार और वानी मंजूर भी हमारे साथ डिंगी वच्छा से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जो है यहाँ 55 हो चुका है स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर, और पारी का 9वां ओवर जारी है। बॉलिंग मार्क पर एम शफी बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार। बाएं हाथ की गेंद बल्लेबाज आरिफ सामना करेंगे उनकी गेंद को खेल दिया है बल्ले का ऊपरी किनारा, और गेंद सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स की जाने आती हुई 6 रन के लिए। ये आरिफ के बल्ले से आने वाला छक्का, और इन 6 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 61 3 विकेटों के नुकसान पर। आप रीप्ले में एंजॉय कर सकते हैं किस तरह से उछाल लेती हुई गेंद पर बल्ला चलाया बाएं हाथ के बल्लेबाज आरिफ ने। अगली गेंद, और इस मतबा गेंद को खेल दिया, फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फीड किया कवर पर, और रन बनाने का कोई मौका नहीं। जुबैर तांतरे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद, राउंड ऑफ विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, इस मतबा विकेट छोड़कर गेंद को खेला वापस बॉलर की जानिब, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को खुद ही फील्ड किया गेंदबाज ने, और रन बनाने का कोई मौका नहीं। शफी वार बॉलिंग मार्क पर थे। 9 ओवर्स का खेल हो चुका है, 61 स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में हिलाल स्पोर्ट्स बल्कि शाला स्पोर्ट्स पांचला का। दसवें ओवर का खेल शुरू हो चुका है। शौकत नाइकू है बॉलिंग मार्क पर, ऑफ स्टंप से बाहर फ्लाइटेड गेंद को खेल दिया फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से तेज, और गेंद जो है सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। तो इन 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65 3 विकेटों के नुकसान पर। आबिद के बल्ले से आने वाला ये चौका, और आबिद का मजमूई स्कोर हो चुका है 27, जबकि यहाँ बल्कि इनफरादी स्कोर आबिद का 27 और मजमूई स्कोर हो चुका है 65 3 विकेटों के नुकसान पर। 10वें ओवर का खेल जारी। शौकत नाइकू बॉलिंग मार्क पर एक मरतबा फिर। शौकत अगली गेंद के साथ बैक फुट पर गेंद को खेल दिया है जगह बनाकर, जब तक बल्कि 2 फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से तेज, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। या फ्री प्ले में देख सकते हैं किस तरह से बैक फुट पर जगह बनाकर गेंद को खेला आबिद ने। आबिद के बल्ले से आने वाला एक और चौका, उन्होंने 31 रन बनाए 23 गेंदों का सामना करते हुए, जबकि मजमूई स्कोर हो चुका है 69 3 विकेटों के नुकसान पर। 3 विकेटों के नुकसान पर 69 हो चुका है स्कोर। और अब शौकत नाइकू 10वें ओवर की तीसरी गेंद के साथ छोटा सा रन अप, गेंद खींच मतलब ऑन साइड की तरफ गेंद को खेल दिया है, एक और चौका आता हुआ आबिद के बल्ले से। लगातार जो है चौके आते हुए आबिद के बल्ले से आपको रिप्ले में ज़रूर दिखाना चाहेंगे किस तरह से इस मतबा जो है गेंद को खेला। सज्जाद हमारे साथ इस दौरान जुड़े हैं, वानी मंजूर जुड़े हैं, सुहेल मुख्तार जुड़े हैं, जुबैर तांतरे जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव नशरियात में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाला स्पोर्ट्स पांचला का स्कोर 73 3 विकेटों के नुकसान पर। 10वें ओवर का खेल जारी। शौकत नाइकू लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके आए हैं और अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं शौकत। गेंद की एक मतबा फिर 2 फील्डरों के दरमियान से बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ 4 रन के लिए, बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ, और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 77 हो चुका है। 77 हो चुका है स्कोर। बैक फुट पर जगह बनाकर कट किया गेंद को, और 4 रन के लिए 2 फील्डरों के दरमियान से आबिद के बल्ले से आने वाला एक और चौका। आबिद का इनफरादी स्कोर हो चुका है 39, 25 गेंदों का सामना किया और लगातार 4 चौके आए इस ओवर में 4 गेंदों पर। शौकत नाइकू एक मतबा फिर ओवर में 5 गेंद के साथ ऑफ स्टंप से बाहर हवा में, लेकिन फील्डर उस ओर कोई मौजूद नहीं, और एक और चौका आता हुआ आबिद के बल्ले से।
आबिद के बल्ले से आने वाला एक और चौका और इन 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81। लगातार 5वां चौका इस ओवर में आता हुआ। अब आखिरी गेंद फेंकेंगे यहाँ पर शौकत नायकू। बैकफुट पर गेंद को वापस बॉलर की जानिब खेला। ओवर मुकम्मल होता हुआ 20 रन इस ओवर से आए और स्कोर बढ़ता हुआ 81। 3 विकेटों के नुकसान पर सईद रिजवान हमारे साथ जुड़े हैं, सज्जाद अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं। 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 81 स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। शाला स्पोर्ट्स पांजला का स्कोर है 81। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में, अब इस मुकाबले में अब 8 ओवर्स का खेल बाकी। शफी वार को लाया गया है एक मरतबा फिर बॉलिंग मार्क पर। पहले ओवर में 7 रन आए। बाएं हाथ के बल्लेबाज आरिफ लेफ्टी सामना करेंगे। गेंद को खेला फील्डर गेंद के नीचे और यहां विकेट गिरते हुए आरिफ लेफ्टी की। आरिफ लेफ्टी जो है वो आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए और चौथी विकेट गिरती हुई 81 के स्कोर पर शाला स्पोर्ट्स पांजला की। आरिफ आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए। आरिफ आउट होकर पवेलियन वापस गए हैं। शफी वार के खाते में जाने वाली ये पहली विकेट। सईद रिजवान बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैच इस वक्त जारी है डंडूसा प्ले फील्ड पर। डंडूसा चैंपियंस ट्रॉफी के तहत हिलाल अहमद आए हैं नए बल्लेबाज। हिलाल अहमद जो कि टीम के कप्तान है वो आए हैं नए बल्लेबाज और साथ निभाएंगे लोन आबिद का, जिन्होंने बेहतरीन पारी अभी तक खेली 43 रन की। 27 गेंदों का सामना किया लोन आबिद ने और 43 रन बनाए, जबकि हिलाल अहमद अब सामना करेंगे मोहम्मद शफी वार की गेंद का। मोहम्मद शफी अपना दूसरा ओवर फेंक रहे। इससे पहले 7 रन दिए और 1 विकेट हासिल की मोहम्मद शफी ने। 81 स्कोर शाला स्पोर्ट्स पांजला का 4 विकेटों के नुकसान पर। डंडूसा चैंपियंस ट्रॉफी के तहत ये मुकाबला खेला जा रहा है और साल में सिर्फ एक टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि मैदान जो है बिल्कुल मेवा बागात के वस्त में वाक़ा है, बीच में वाक़ा है। उस लिहाज से मार्च के महीने तक जो है ये मैदान खुला होता है, उसके बाद बंद किया जाता है इस मैदान को। सईद रिजवान बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सज्जाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद शफी बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार, सामना करेंगे उनकी गेंद का। क्रीज पर नए आने वाले बल्लेबाज हिलाल अहमद, शाला स्पोर्ट्स टीम के कप्तान हिलाल अहमद जो है वो सामना करेंगे मोहम्मद शफी वार की गेंद का। शफी छोटे से रनअप के साथ गेंद की इस मरतबा गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड की जानिब। देखना होगा फील्डर आए, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल किया दोनों बल्लेबाजों ने और 1 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 82, 4 विकेटों के नुकसान पर। आबिद सामना करेंगे अब, जिन्होंने इससे पहले 43 रन बनाए। लोन आबिद इस मरतबा ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को खेलना चाहता ऑन साइड की जानिब। ऑफ स्टंप से थोड़ी बहुत बाहर और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद मोहम्मद शफी की, इस मरतबा गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की जानिब। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। अब 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 83 हो चुका है। सईद माजिद हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद मोहम्मद शफी के हिलाल अहमद के लिए, गेंद थोड़ी नीचे रहते हुए और यहां स्लिप से फील्डर गए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। सईद माजिद बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शफी वार अगली गेंद के साथ विकेट छोड़कर गेंद को खेलने की कोशिश, कट करने की कोशिश हिलाल अहमद की, लेकिन नाकाम और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इस तरह से कुल मिलाकर जो है 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल। मजमुई स्कोर हो चुका है 83, 4 विकेटों के नुकसान पर। 83, 4 विकेटों के नुकसान पर शाला स्पोर्ट्स पांजला का स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में। और देखना होगा अभी भी 7 ओवर्स का आना बाकी है और बल्लेबाजी भी मौजूद है शाला स्पोर्ट्स पांजला के पास, तो यहाँ हाथ खोलने का मौका और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोरने का मौका, ताकि एक अच्छा बड़ा टारगेट जो है वो वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब के सामने रखा जाए।
A good partnership in those middle overs have revived the innings of Shala Sports Panzla. Even though the star batter of the lineup, Lon Abid, has been there, and he is constantly fighting the middle of the bat. In the previous over of Shaukat Naiku, he got 5 boundaries of 5 bowlers. He got 5 fours of 5 bowlers. He's on 44. He's been the leading batter of this lineup. He's been the crowner, we can say. His whole lot will lie on him, how they score and what kind of target they want to set. First ball he faces and was trying to work him on the onside, but extra bounce on offer, then wraps him on the thigh pad, rolls away on the onside. He's on 44 of 30 at over number 12. They stand at 83 for loss of 4. As I said, they were 3 down on just 40 runs, and this has been nicely punched away. But, the protector there at the boundary, the fielder who is stationed at the boundary ropes, tidies the things up, will get a single. Goes down to the other end, takes the score to 84 for the loss of 4 now. As Hilal, the skipper, is joining in, and he is joining Lon Abid. A good partnership here will definitely define this innings of Shala Sports Panzla. 150-160 will be a good score here on this wicket, which has got good pace and bounce, and he works him on the onside, goes cross-batted, and he times that one well, and the ball goes into the boundary for 6. A cross-batted swipe that was, you can see in the replay, is a slow motion replay that is of the previous 6. The left arm orthodox invites him. He was dramatically tossing the ball up, and he smokes that one away on the onside. Gets it over that fielder, was at the back, was at the boundary line. Deep mid-wicket, had no chance at all. A timely strike from Hilal, the skipper. Next one. Allowed to wait and watch. He goes again. But this time only manages at the top edge. And it goes down at short third man. It is catch number 4 which has gone down. Straight up in the air. A straightforward chance that was. And mostly we can say it was an absolute lollipop for that fielder at short third man. And he puts that one down. 90 for 4. It could have been 90 for 5. The fielding has been absolutely worst for Vadodara Sports Club today. They have put down as many as 5 catches. And you still think that story could have been very different. They could have at least 7 or 8 down at this stage of the game had those catches been taken. And the previous one was, even though a sky was high in the air, that was so easy. And now Abid tries to go reverse. This could be wicket. And it has been taken. Abid has to walk back. He was trying to switch the grip of the bat. He was playing nicely. He was going nicely. But all of a sudden he tries to go unconventional, trying to fetch that unconventional shot, but gets it in the air. No timing at all. And finds the fielder at extra cover. He has to walk back. No trouble. Serious problems for Shala Sports Panzla. 91 as half of the side is back in the hut. With Umar missing that, they're missing the big man Shahid Shah, and who is sending in love for Lon Abid. Said Majid is mentioning that I'm watching this game from the same ground. Shahid is also the part of live broadcast, and Muhammad Azam as well, watching from newsroom of Doordarshan Kendra Srinagar. Thank you each and everyone for showing your love and support. As I said earlier, watching this game, you're enjoying this game on YouTube's JK Sports Discovery as well, and on the platform of Facebook you're watching on Global News Network. What a turnaround this has been in the previous over of Dawood lefty. You could have the wicket of Hilal, the skipper, as well. But unfortunately the drop catcher, but it doesn't cost them too much, as they got the set batter out. They got Lon Abid, and wasn't needed at all. He needed to stay there till the end for the cause of the team, to get them up to a respectable score. At trying to play a switch hitter, rather we can say, because he changed the grip of the bat and was trying to go onside, targeting that cover area, but he finds the fielder inside the ring and has to depart on well made 44. And now the new batter is in. It is at number 7 for the team. He faces the first one and doesn't time at all. Hilal, he's struggling for the timing, even though he got a reply, he got a life, but can he make it a big as a skipper of the team? He'll have to take this one deep as much as you can.
5 wickets already down with 6 more overs to go. I guess 5 more overs to go. Short delivery off the back foot he goes and watches the ball till the last moment. That is what as a bat you need to do on this surface, where you have to counter that bounce, counter that pace as well. And he just tucks it on the offside. No addition to the total. 92 for 5 after 13 it is. 5 more overs to go. But I still believe that if they get 150, 160, that will be a challenging task for Vadodara Sports Club to chase that one down. And the batters will have to do, we can say they will have to pick those bones out of that. They will have to pull up their socks to win that game when you're chasing on this kind of a wicket, 160, 150. It's a good score on this, but you still have a long way to go. They are 92 for 5. They still need at least 60 more of coming 5 overs. As Shafi War is the new bowler. This one is way outside off stump. 1 more run added. 93 for 5 after 12.2 overs. I guess it's over number 13 in progress. Next one, it was Maroof who was trying to launch big. He was trying to go downtown this time, but he gets beaten again. Next one, shot, gets an outside edge, and this time wicketkeeper drops. It was a tough chance. You can see it was a hard nick, and he gets no reaction time at all, and it flies down to the third man boundary for 4. Lucky runs these. You can say valuable runs for the batting side. He gets a boundary. It's 97 for 5 as Maroof gets off the mark as well. And this time he goes off the back foot and just tucks that one on the offside down to short cover region. 97 for 5 it is, with final ball coming up. And he goes to Maroof. He goes aerial. It's in the air. Is it a chance or is it away? Oh, taken on the second attempt. As it looked like the ball will carry the distance, it will go over the ropes. But a good catch there, fairly a good catch I can say, because you have to keep your eyes on the boundary ropes as well. He juggled it at the first attempt, but on the second attempt he takes the catch. 6 down, 13 overs gone. And in the meantime, one of the legendary cricketers of the side of Sopur, Nisar Ahmed Khande Saab, and his own way he is mentioning the comment, so people can describe that comment as well. बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस। हम तो निसार अहमद खांडे साहब हमारे साथ जुड़े हैं, रांची क्रिकेटर, और अभी भी क्रिकेट को फ़रोग देने में इनका खासा ताउन रहा है सोपोर में बिलखुसूस कहा जाए। तो जो कमेंट उन्होंने लिखा है वो आप ही के बारे में, मेरे साथी के बारे में कि मेरा फिरदौस। तो बहुत बहुत शुक्रिया निसार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। 97 हो चुका है स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर, और मारूफ जो है वो आउट होकर पवर लाइन वापस जा चुके हैं। मोहम्मद हमाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब यहाँ से आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी 5 ओवर्स का खेल बाकी है। 97 स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर हिलाल अहमद और आफरीदी आए हैं नए बल्लेबाज। आफरीदी नॉन स्ट्राइक एंड पर है, जबकि हिलाल अहमद स्ट्राइक पर सामना करेंगे दाऊद लेफ्टी की गेंद का। ऑफ स्टंप से बाहर क्रॉस बैट से खेलना चाहते थे गेंद को ऑन साइड की तरफ, लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, जो कि विकेटों के साथ चिपके हुए हैं। दाऊद लेफ्टी हिलाल अहमद के लिए अगली गेंद के साथ राउंड द विकेट। इस मतबा पड़ने के बाद थोड़ी बाहर की जानिब जाती हुई और गेंद की रफ्तार को इस मतबा कम किया था और हिलाल अहमद ने अपना हेलमेट उतारा है। देखना होगा हिलाल अहमद अब जो है किस तरह से दाऊद लेफ्टी की गेंदों का सामना करेंगे। यहाँ 97 स्कोर शाला स्पोर्ट्स पांचला का 6 विकेटों के नुकसान पर। हिलाल अहमद के लिए फ्लाइटेड और इस मतबा गेंद को खेल दिया, ऊंचा शॉट, लेकिन देखना होगा इस दौरान 1 रन बना और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 98 हो चुका है स्कोर। अब आफरीदी सामना करेंगे दाऊद लेफ्टी की गेंद का। दाऊद लेफ्टी आफरीदी के लिए गेंद को खेला बैक फुट पर, लेकिन फील्डर मौजूद शॉट कवर पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। वहां शौकत नाइकू थे, रन मौका नहीं। शाहिदा हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मतबा गेंद को खेला बैक फुट पर, जब तक गेंद को रन के लिए बहुत ज्यादा आगे आए थे। देखना होगा क्या वापस पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। जी बिल्कुल, वापस पहुंचने में कामयाब।
वापस पहुंचने में कामयाब आफरीदी। वहां पर काफ़ी ज़्यादा आगे गए थे रन लेने के इरादे से, लेकिन हिलाल अहमद ने मना किया और वापस पहुंचने में कामयाब। शाहिद आफरीदी हमारे साथ जुड़े हैं, सज्जाद अली हमारे साथ जुड़े हैं पांजला रफियाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाला स्पोर्ट्स पांजला का स्कोर है 98, 6 विकेटों के नुकसान पर 14वें ओवर का खेल जारी। दाऊद लेफ्टी है वाडोरा स्पोर्ट्स की आफरीदी एक मतबा फिर जिन्होंने अभी तक अपना खाता नहीं खोला, और दाऊद लेफ्टी अपने ओवर में आखिरी गेंद के साथ। और नाम इनका है, इस मर्तबा हवा में शॉट और बेहतरीन कोशिश वहां पर फील्डर की जानिब से, बेहतरीन कोशिश, हालांकि कैच ले नहीं पाए और गेंद जो है उनके हाथों में आई थी। जब लगाकर गेंद को एक हाथ में कैद करने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम, और इस दौरान गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। बासित डार जिनका नाम आफरीदी है, यहाँ पे क्रिक हीरोज पे उनके बल्ले से आने वाला ये चौका, और 4 रन के साथ 100 रन मुकम्मल होते हुए शाला स्पोर्ट्स पांजला के 102 मजमूई स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर कुल मिलाकर 14 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। मजीद 4 ओवर्स का खेल आना बाकी। Still 4 more overs to go. Just 102 on board for the loss of 6, as Shahid mentioning that it is Basit Dar. He's been named Afridi on Crick Heroes, and Umar and Shahid Afridi. They're watching this game, but as I said, that they will have to go up to 150, 160 to put up some fight against this formidable sports club of Vadora. This is in the air again. Who is going to take the catch? The bowler running towards his left, and he puts the catch down. And I'm still losing the count, the number of catches today Vadora Sports Club have put down. Another one goes down, and they will have to find those ways of scoring boundaries. That will have to find those ways of scoring briskly and quickly to get up to a respectable score where you can put up a fight, where the bowlers can freely bowl on that. Oh, this one is on the pad. Is allowed to wait for the signal of the umpire. Given away as played, and it will go down to the boundary for 4. A much needed boundary for Shala Sports Pansla as the score moves up to 106 for 6, 107 for 6. And Basit Dar gets ready to face the next delivery. It's shot, he pulls it on the onside. And does he get in the gap? No, one bounce is straight into the hands of the fielder. Oh, he'll get a single. 108 for the loss of 6. 3 more to go after that. And what is cooking in the mind of the batters, that what is a safe score on this wicket? Next one, he backs away and he clean bowls him. He was leaving the crease, leaving the stumps. He ultimately at the last moment he misses the line of the ball and it crashes onto the stumps. Hilal, the skipper, has to walk back. Breakthrough for Vadora Sports Club as they got 7th of the day. 108 for the loss of 7. Shafivar gets his 3rd. He's been brilliant with the ball, or each and every bowler the captain has used today. The captain has utilized it, the resources so well, and each and everyone living up to the expectations, delivering the punch whenever they have been asked to bowl, whenever they have been used by the captain. I can say the skipper leading from the front, bowling well, and rest of the bowlers complementing each other and getting those wickets at regular intervals, putting pressure on the batters. Kevin Abid was the lone survivor, he was the lone fighter, but rest of the batters failed today. 7 down on 108 in over number 15. Quality stuff with the ball, and Vadora Sports Club will believe they're still in the game the way they have bowled, and they will be happy if they chase down 140 below that 140, 130 mark, and they will be trying hard from here on. You're in the tail now of the batting department of Pansla. So it will be the first priority to wrap up the innings as soon as possible, to quickly get them all out, and especially in 120, 130, and give yourselves a chance, your batters a chance to chase that one down, and to book yourselves in that next knockout stage. And you know it's a knockout game, the winner will advance through, and the runner-up or the loser of today's game, they will have to pack their bags. And it will be end of journey for them in this tournament. Once again in the air, but it's in the gap. Beautifully guides that one away. That was beautifully played, and gets it down to the 3rd man boundary for 4.
gets off the mark and now it's Dar Basit, the new batter, to the crease. But I guess Dar Basit is at the non-strikers, and especially Afridi. I guess it is some sort of problems in the creek hero. 112 for the loss of 7. As he goes, slower delivery. The batter waits for ages to wait for the ball to punch it on the offside. We'll get a single on that. And takes the score to 113 for the loss of 7 after 15 overs, so 3 more overs to go. And can we see some fireworks from the batters, some high-flying bowlers, some 4s and 6s to entertain the crowd as well, so that the crowd will engage with those good shots, with those towering 6s and 4s. They will enjoy each and every bit of it, each and every piece of it. Jahangir Malla watching, and Umar and Muntazir Lund watching from New Delhi. Oh, that is a gorgeous shot. 6, that is what they need here at this stage of the game. At the crucial juncture of the game, Dar Basit thumps him over extra cover boundary, and he gets half a dozen. Call it a strike. You can see the skipper has been very expensive today. He's leaking runs. He got 5 boundaries. He leaked 5 boundaries in his second over against Starpit. And off the very first ball, he's been welcomed. He's been greeted with a 6. And now again. Oh, that is mighty. That's huge. Off the back foot. He generated a lot of power behind the shot. And he gets this one away in the air, sailing away into the boundary for 6. It's 125 for 7. And Dar Basit, who is on 5. Shahid, you're absolutely right. But when Dar Basit arrived to the crease, he was named as Afridi. Now it has been corrected. Even Dar Basit is at the non-strikers end. And when he was at the crease, it was Afridi on the screens. And now it has been corrected. Back-to-back 6s. Can we witness hat-trick of 6s? He's caught again in the air. But it should. He was trying to go big. He was trying to go downtown again. Lack of timing. Gets it at the lower half of the bat, lower part of the bat. But fine is long on. Wicket goes down. तो यहाँ पे एक और विकेट 25 के मजमूई स्कोर, बल्कि 8वीं विकेट गिरी है 125 के मजमूई स्कोर पर। 16वें ओवर का खेल जारी है और आफरीदी आउट होकर पावर लाइन वापस जाते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के आए थे। गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक कहा जाएगा, क्योंकि पहले ही 2 छक्के आए थे, उसके बाद एक और बड़े स्ट्रोक की जानिब गए, लेकिन अपनी विकेट गंवा दी यहां पर आफरीदी ने। तो आफरीदी 17 रन बनाकर आउट होकर पावर लाइन वापस जा चुके हैं। 125 के स्कोर पर ये शाला स्पोर्ट्स पांचला की 8वीं विकेट गिरी है। 16वें ओवर का खेल जारी। शाहिद, मुंतजिर लोन, जहांगीर अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस लाइव नशरियात में हमारे साथ निभाने के लिए। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर बैक वक्त देख सकते हैं। इस लाइव नशरियात को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। अब देखना होगा नए बल्लेबाज कौन से आए हैं जो साथ निभा। डार बासित जो है नईम आए हैं नए बल्लेबाज डार बासित का साथ निभाने के लिए। नईम नए बल्लेबाज आए हैं, डार साथ निभाएंगे और देखना होगा सामना करेंगे शौकत नायकू की गेंद का। शौकत नायकू बॉलिंग मार्क पर 16वें ओवर की पहली गेंद के साथ गेंद की और इस मरतबा गेंद को ऑन साइड की तरफ गेंद स्लिप की जानिब गई, जहां पर गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। ये 16 कमू हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और नेटवर्क इशू आ रहा है। फिरोज मजीद भट्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शौकत नायकू है बॉलिंग मार्क पर। सिराजुद्दीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। शौकत नायकू 16वें ओवर की 5वीं गेंद के साथ और सामना करेंगे उनकी गेंद का नईम।
नईम के लिए ऑप्शन से बाहर, इस मतबा गेंद को ऑन साइड की तरफ एक मतबा फिर खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस। तो कुछ नेटवर्क इशू आया था। मीर उवैस हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीर उवैस हमारे साथ जुड़ने के लिए। 130 है स्कोर, 8 विकेटों के नुकसान पर। अरबाज है बॉलिंग मार्क पर, 17वें ओवर का खेल जारी है और सामना करेंगे उनकी गेंद का डार बासित। डार बासित के लिए अरबाज की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, तेजी के साथ गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, जो कि सफाई के साथ गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद फाइन लेग की जानिब गई, जहां पर गेंद को फील्ड किया गया। वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से अरबाज बॉलिंग मार्क पर, 17वें ओवर का खेल जारी, 130, 8 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद के साथ अरबाज ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की एक मतबा फिर तेजी के साथ गेंद उछाल लेती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 130 मजमूई स्कोर, 8 विकेटों के नुकसान पर। अरबाज बॉलिंग मार्क पर है और पारी का 17वां ओवर जारी, सामना करेंगे उनकी गेंद का बासित। 5 रन पर खेल रहे हैं बासित। एक मतबा फिर सामना करेंगे अरबाज की गेंद का। अरबाज लंबा बॉलिंग रनअप अरबाज का, अभी तक विकेट लेस रहे लेकिन अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया अरबाज ने। अरबाज अगली गेंद के साथ अंपायर को क्रॉस किया, इस मतबा एक मतबा फिर जारहाना अंदाज से खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद जो है स्टंप्स और पैड के दरमियान से होती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सिराजुद्दीन मीर उवैस हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इनके साथ साथ फिरोज मजीद भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बॉलिंग मार्क से अरबाज 17वें ओवर की अब आखिरी गेंद के साथ। अभी तक ओवर जो है इसमें सिर्फ 1 रन आया, फाजिल रन की सूरत में अच्छा ओवर जाता हुआ वाडोरा स्पोर्ट्स के लिए पारी का 17वां ओवर। इसके बाद मजीद 1 ओवर का आना बाकी। अरबाज ओवर में आखिरी गेंद के साथ सामना करेंगे उनकी गेंद का बासित। बासित के लिए कदमों का इस्तेमाल, गेंद को देखे बगैर जो है कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद ऑफ स्टंप से बाहर पिच होती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तो कामयाब ओवर मुकम्मल होता हुआ अरबाज का 17 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 130 स्कोर, 8 विकेटों के नुकसान पर। Basit failing to connect against that pacing bounce of Arbaz. He was just dancing down the wicket but connects thin air. Was trying to swing blindly but unfortunately there was no connection with the ball at all. You can see just one extra in that previous over, 130 for 8 after 17, just 1 over to go now. And it's Bilal Javed to start the final over, first ball. And this one coming back in sharply. And last couple of overs have been really good for Vadodara Sports Club. The lines and lengths the bowlers bowled. And that previous over where Arbaz conceded just solitary run were wide. It's 130 for the loss of it, just 5 to go. Naeem and Dar Basit are at the centre. 5 more deliveries. This is down the leg side. Yeah, should have been wide had he left to the ball, but he rather choose to go across and he gets beaten due to the pace of Bilal Javed. Excellent stuff with the ball, fantastic stuff with the ball. Eras Mir is watching from Rafiabad Chijama. Sirajuddin, it was sometimes a network fluctuations, but now it's all okay. It's going smoothly and nicely. Full toss down the leg. We'll have to wait for the signal. He'll get a wide, a single on that, 131 for 8. With 4 more bowlers to go, can they get a couple of big shots here out of those 4 bowlers to get beyond 140, 145? Just 4 to go now. Plenty of protection on the onside. Wideish long on, deep mid wicket and wideish long leg. Long off and deep cover in place. Outside edge. He'll go down to the third man for 4. We'll have to wait and watch. Yes, it is. Outside edge turns away into the boundary. Quality shot that was. Off the back foot, deliberately played, you can see. As I felt that it was an outside edge, but that was deliberately played, knowing that third man fielder was a bit wider and no chance at all. He gets a boundary, 135 for 8 it is. Next delivery, bangs that one shot, and it whizzes past the nose of the batter. How the bowler might have been saying to the batter there, just smell the leather off the ball. That was nasty bouncer, a quick bouncer, a good delivery,
and it makes any batter uncomfortable there. With pace and bounce on offer, he can beat the batter. 2 more to go now. A penultimate one, bad delivery, down the leg side is, and he just finds the gap down to the fine leg fence for 4. You're bowling really well, you were targeting that offside area, that 4th or 5th stump line, you were trying to put that batter off the back foot, but all of a sudden he bowls a wayward, a terrible delivery. Down the leg side, just needed to tickle that one fine, he just tickles that one away. Fine leg had no chance at all, even though the outfield is so lightning fast. Once you get the ball in the gap, and there will be no chance at all for the fielders to stop that final ball. An outside edge, no third man, and it will be a boundary. A flurry of boundaries in the final over will mean that Shala Sports Panzla will finish their quota of 18 overs on 143 for 8, and Vadodara Sports Club will have to chase 144 in their allotted quota of 20 overs. So give us a break of 10 or 15 minutes. We'll be back after a short while to begin the chase. जाकिर अशरफ और हैदर, जबकि शिवम है बॉलिंग मार्क पर. शिवम पहली गेंद डॉट गेंद हवा में उछलती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में. 144 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब को. शिवम अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की बैक फुट पर गेंद को निकाल दिया. गली में फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं. जाकिर अशरफ और हैदर सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी में आए हैं वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से. 144 रन चाहिए 18 ओवर्स में, और देखना होगा क्या ये टारगेट जो है इसे हासिल करने में कामयाब होगी वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब की टीम. शिवम अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट, इस मतबा गेंद को खेल दिया, 2 फील्डरों के दरमियान से होती हुई गेंद सीधे बॉडी लाइन को छू गई 4 रन के लिए. ये पहला चौका आता हुआ जाकिर अशरफ के बल्ले से, और खाता खुलता हुआ वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब का 4 बिना किसी नुकसान के. जाकिर अशरफ के बल्ले से आने वाला ये चौका बड़ा खूबसूरत चौका, और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ, अब खाता खुलता हुआ 4 हो चुका है स्कोर. आशिक हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिक हुसैन हमारे साथ जुड़ने के लिए. और आप YouTube पर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप देखना होगा शिवम बॉलिंग मार्क पर एक मतलब फिर सामना करेंगे उनकी गेंद का जाकिर अशरफ. शिवम 9 नंबर खिलाड़ी है, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे, गेंद की बैक फुट पर गेंद को खेल दिया, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, और गेंद एक मतलब फिर बॉडी लाइन को छूती हुई 4 रन के लिए. एक और चौका आता हुआ, और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब 8 बिना किसी नुकसान के वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब का. बैक फुट पर गेंद को निकाल दिया, फील्डर 2 फील्डर के दरमियान से होती हुई गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई. फील्ड रिस्ट्रिक्शन के ओवर जारी है तो उसका फायदा मिल रहा है बल्लेबाजों को. अगली गेंद शिवम की, इस मतबा ऑन साइड की जाने, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, और गेंद सीधे स्क्वायर बाउंड्री को छूती हुई 4 रन के लिए. एक और चौका आता हुआ, और इन 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12. पहले ओवर का खेल मुकम्मल, 12 हो चुका है वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब का स्कोर. जीत के लिए दरकार 144 रन. Welcoming each and everyone again with the chase of Vadodara Sports Club. The 2 openers are at the center. It is Zakir Ashraf and Haider have been sent in to chase down 144, on a mission to chase down 144, and what a fantastic start this has been for them, and they have started in a positive manner with Tyrrell coming off very first over, Shivam conceding 3 boundaries, and Zakir Ashraf taking full toll of that. 3 boundaries in the over number 1, 12 without loss, 144 is the target. A heavily coordinated offside fielder for the bowler. First ball as he guides that one nicely, goes one bounce down to third man fielder, and there is no chance of a run. As you can see, the ball went very quickly down to the short third man. 12 without loss, it is 144 in a T20 game. I might say is a below par score, but if you bowl well, if you keep the line and length tight, if you keep the batters tight, they don't let them to score freely, and if you restrict the scoring opportunities of the batters, you have those chances of creating that pressure
and always about the required run rate in the second innings when you're chasing the score. Never number 2 in progress. Maruf, and it is Shivam and Maruf who are leading the pace attack of Shala Sports Panzla, and the start, need to be cautious in the start. Need to bowl well in the start. That is how you define the chase. You can stop the run flow. If you bowl well in the first half of the game inside the power play, it's most important thing. And if you limit the scoring opportunities or restrict to the batters, and then you can really be able to snatch a couple of wickets, and then you give yourselves a chance to win this game as well. Maruf goes again. That is better line. He comes back strongly, and wicket to wicket stuff is what you need at this stage. And he forces the batter to be off the back foot. Heather just punches the ball. There is no addition to the total. The highlights of the innings for Shala Sports Panzla was Abid Zirikes with the bat. Even they made 44, and couple of good cameos at the late stage of the game helped them to go beyond 140 as they posted 143 on board in 18. And after chasing that one down, Shala Sports Panzla, the bowlers will have a job to do. I can see a real test for them to defend that low score. 108 bowls, 142 runs on a ground where the dimensions aren't too big, but one plus point you have in your favor to wicket has got a bit of spice. It's a spicy wicket, and he got good pace and bounce. He can trouble the batters, there is no doubt about that. But Vadodara Sports Club will surely take that. If they be patient, if they show that patience, if they try to stay there at the crease, surely going to chase the down. You can see that unusual fielder set, wideish third man. There is one at secondary third man as well, very close to each other outside the 30-yard ring. Rest of the fielders are cordoning the circle, a heavily cordoned field. Next one, it's a bouncer. You can see it has been given one for the over, but it clearly was above the head high. The wicketkeeper has to jump to stop the ball. You see, as I said, that unusual third man fielder set. 2 fielders at the third man region, 1 at backward point. There is 1 at cover, extra cover and mid-off inside the ring. Abid at mid-on, short scare leg and fine leg in place. Maruf goes again, gets the outside edge over the wicketkeeper's head. Will go one bounce into the boundary for 4. Wasn't convincing at all, wasn't timed at all. He was hitting blindly. He gets the top edge, flies over wicketkeeper. As I said during the first innings as well, and the kind of outfield this ground has, you get the ball in the gap, then don't chase the ball, share your legs, then it travels at the rate of knots once it gets in the gap. And this time it was over the wicketkeeper's head, and you can't place fielders behind the wicketkeeper. No doubt you had third man, but he had no chance at all. And he gets a boundary of the final ball. It's 16 without loss after 2, and Danish Pogba is watching the game. Walaikum salam, brother. Remember, it is Dendusa Premier League hosting this important cricket match between Vadodara Sports Club and Shala Sports Panzla. Each and every viewer who are watching the game here in this respective field or at the Global News Network as well, we'll be hoping that it turns out to be a good game between the two sides. It turns out to be a good contest between bat and ball, so that they'll get value for their money, a value for their time. And Danish Pogba absolutely fine, thanks to Almighty Allah. Hopefully you're doing good as well. 17 it is. Vani Iqbal, he is mentioning, he's commenting nice video quality. And thank you very much for providing a love and support. That is shot of the day. What a shot that was from Zakir Ashraf. Once you provide that width to the batter, you're asking for trouble. For me, it's shot and a half. And look at that in slow motion replays. A furious cut shot, and it rockets away, bullets away into the fence for 6. Half a dozen, first off the chase for Vadodara Sports Club, first of the chase for Zakir Ashraf. Tremendous striking, ball striking. This is now he switches round the stumps to ball. Can he make any difference? And he guides him down to backward point, overthrows there, but a backup fielder at short mid-wicket region. Terrific shot, that previous one. No words to describe that.
So beautiful, elegantly played, and he gets that one over backward up point and into the stands. Next one, Shivam goes again, and this has been drilled back past the bowler. Absolute copybook that was. Presenting full face off the bat, and look at the shot. Shivam switching round the stumps, full delivery, and driven back past the bowler. Absolutely terrific that was, copybook that was, and looked so beautiful. Fantastic stroke, and back past the bowler, and no chance for mid-on and mid-off at all. The ball runs away into the boundary for 4. 27 without loss after 2.3 overs. A brilliant start first up. A furious start with the bat. They're going all guns blazing here. In chase of 143, they are absolutely going hammer and tonk. Goodness gracious, what a start. Next one on the pads. That's a bad delivery, and it deserved the treatment. Just flicks it away, and it rockets away once again into the boundary for 4. What a ball striking this is from Zakir Ashraf. He is 26 of just 10. And Vadodara Sports Club, the two openers making the statement. I can say making mockery of the chase of 143 here. 31 in over number 3. And Vadodara Sports Club off to flyer, flying away. And proving to be expensive as Shivam. No doubt you have got pace, and it always can be sometimes a 4 of you. It cannot be helpful to you. And the ball takes the outside edge. It will zip away, and those outside edges of a pace bowler will flew down to the boundary, and which we have watched until now, which we have witnessed until now. And done with over number 3. We still have one ball left, Shivam. And the man who is leading the pace attack, who is leading the pace battery, is proving to be very expensive. He's leaking runs at will. Next delivery, batter line this time. Balls in that 4th or 5th stump line. He forces the batter to be defensive. He just trying to defend that one. And there is no connection at all. Goes into the gloves of wicketkeeper. Over number 3 gone. It's 32 without loss. Earlier winning the toss, Shaukat Naik was a happier man as he won the toss, and he said that we're going to bowl first. We will use the surface. There is still that spice in the surface. There is still that pace and bounce in the surface, but as a bowler you'll have to use that well. You'll have to be extra cautious, so you can see you'll have to be very clever, cunning. You'll have to outfox the batters there. And 32 on board. This has been a good start for Vadodara Sports Club. Maruf to continue, who conceded 4 in his first. He was excellent with his lines and lengths. He was good with his lines and lengths. And it will be Zakir Ashraf against him for the first time, because Zakir faced those 12 balls. And those 12 balls were up against Shivam. He was very comfortable. He took him to cleaners where he conceded 28 in his 2. Maruf to continue. The first ball down the leg it is, helps it away around the corner, and 6 is the signal. He's dealing in boundaries here, whether it's boundaries, whether it's 4s or whether it is 6s. Zakir, he wants to finish it. Quality stuff with the bat. Spills that one down the leg side. Easy pickings always for a batter. And when you have fine leg inside the ring, you're asking for trouble. You're bowling down the leg side. And one more thing which isn't in your favour. Shorter boundaries once again. Down the leg side this is. And no chance for wicketkeeper. 5 wides you will get. Absolute pressure on Shala Sports Spanzla here. Not able to stop the run flow. You're defending a low target. The bowlers need to be on their toes. You'll have to pull up your socks and have to be disciplined with ball again. He jabs that one away and sends that one into the stands for 6. As I said, he is dealing in 6s only. Just a half tracker, just short. And how quickly he picks the length there. That was the beauty of the shot. And it wasn't a full flow off the batter. We can say it was just a short arm jab as he
deposits him and into the stands for 6. How beauty of a batting this is from Zakir, and he's taking on the bowlers, he's attacking them, and he is absolutely putting them off attack, off radar. The bowlers have been totally looked off clear, and bowling, sprinting, spilling those bowlers way down the leg side, and Zakir Ashraf needs no second invitation. At this moment it is Azan time, it's called to prayer as we will take a short little break. We'll join you after a short while. ايش مگر هم کی پور شو دلو خطر तो अजान का वक्फा यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ और
अभी गेंद के आने का इंतजार है। इस दौरान 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 59 स्कोर है, 1 विकेट के नुकसान पर वाडोरा स्पोर्ट्स का। तकरीबन 15 की औसत से रन्स आ रहे हैं वाडोरा स्पोर्ट्स के लिए। एक अच्छा आगाज और यहां मुश्किलात बढ़ती हुई शाला स्पोर्ट्स पांजला के लिए। एक तो पहले से ही टारगेट बहुत कम दिया गया है इस मैदान में, छोटे से मैदान में, और दूसरा ये कि गेंदबाज उस तरह की लय में नजर नहीं आए। लाइन लेंथ जो है गेंदबाजों की वो उस तरह की नहीं दिखाई दी। यही वजह है कि 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और 59 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। मोहसिन भट्ट 10 रन पर खेल रहे हैं, हैदर ने 4 रन बनाए हैं। वाडोरा स्पोर्ट्स का स्कोर 59, 1 विकेट के नुकसान पर। इस दौरान शौकत अहमद भट्ट हमारे साथ जुड़े, शौकत अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वानी इकबाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए। तो गेंद के आने का इंतजार है। गेंद जो है मैदान से बाहर जाके गिरी और अब देखना होगा शौकत भट्ट हमारे साथ मिका से जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खूबसूरत सरजमीन से जुड़ने के लिए। 59 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर वाडोरा स्पोर्ट्स का। मारूफ बॉलिंग मार्क पर, मारूफ का ओवर जो है मुकम्मल हो चुका है। 2 ओवर किए, 31 रन दिए मारूफ ने, और खासे महंगे रहे, हालांकि 1 विकेट उनके खाते में गई। और मोहसिन भट्ट ने 2 गेंदों का सामना किया, 10 रन बनाए, 1 छक्के और 1 चौके की मदद से। जबकि हैदर जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर है, उन्होंने 7 गेंदों का सामना किया और 4 रन बनाए। यहाँ आप सब व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि डंडूसा चैंपियंस ट्रॉफी का ये पहले राउंड का एक अहम मुकाबला इस वक्त जारी, और मुकाबले में शाला स्पोर्ट्स पांजला की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 144 रन बनाए मुकर्ररा 18 ओवर्स में, जबकि 143 रन बनाए और 144 रन का हदफ मिला वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब के लिए। और वाडोरा को बेहतरीन आगाज फराम हुआ। 59 स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर, 4 ओवर्स का इख्तिताम हो चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को शेयर करके बाकी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर बैक वक्त देख सकते हैं। फेसबुक पर ग्लोबल न्यूज नेटवर्क और यूट्यूब पर जेके स्पोर्ट्स डिस्कवरी। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइव नशरियात में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जानकारी देना चाहेंगे सोपोर पुलिस के ज़ेरे एहतमाम मार्टियर्स मेमोरियल कप जो साल रवा का जारी था, उसका फाइनल मुकाबला आने वाले मंगलवार को खेला जाएगा। आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा मंगलवार को उस फाइनल मुकाबले में। तो गेंद का आने का इंतज़ार था और गेंद जो है अब मैदान में आ चुकी है, और देखना होगा मोहसिन भट्ट जो कि जाने जाते हैं वो इस वक्त क्रीज पर है और गालिबन नॉन स्ट्राइक एंड पर जाएंगे क्योंकि ओवर मुकम्मल हो चुका है। तो देखना होगा किस गेंदबाज को बुलाया जाएगा। 4 ओवर्स का खेल हो चुका है। ये परेश इसहाक हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका परेश इसहाक हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मारूफ ने 2 ओवर किए, 31 रन दिए और 1 विकेट हासिल की मारूफ ने। 15.50 की औसत से रन आए मारूफ के ओवर से। और अब देखना होगा किस गेंदबाज को बुलाया जाएगा, क्या बॉलिंग में तब्दीली लाएंगे। हिलाल अहमद खुद आए हैं, टीम के कप्तान स्पिनर है, और मुझे नहीं लगता कि ये सही फैसला उनका यहाँ गेंदबाजी के लिए आना, क्योंकि अभी भी फील्ड रिस्ट्रिक्शन के 2 ओवर बाकी है। तो यहाँ हाथ खोलने का भरपूर मौका है बल्लेबाजों के पास। तो हैदर सामना करेंगे हिलाल अहमद की गेंद का। हिलाल अहमद बॉलिंग मार्क पर, पारी का 5वां ओवर लेकर इनफरादी तौर उनका पहला ओवर, और सामना करेंगे उनकी गेंद का दाएं हाथ के बल्लेबाज हैदर जिन्होंने 4 रन बनाए 7 गेंदों का सामना करते हुए। हिलाल अहमद छोटे से रनअप के साथ हैदर के लिए ओवर द विकेट, गेंद की बैकफुट पर गेंद को खेल दिया है। फील्डर उस ओर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। अब मोहसिन स्ट्राइक पर आए हैं, मोहसिन भट्ट जिन्होंने इससे पहले 2 गेंदों का सामना किया और 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 10 रन बनाए मोहसिन ने। परेश हाक बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हिलाल अहमद मोहसिन के लिए, मोहसिन
सामना करेंगे हिलाल की गेंद का, ऑप्शन से बाहर, देखना होगा वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर जहूर अहमद की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ एक इजाफी रन के साथ 61, एक विकेट के नुकसान पर वाडोरा स्पोर्ट्स का 144 रन के ताकुब में। मोहसिन एक मतलब फिर सामना करेंगे हिलाल अहमद की गेंद का। हिलाल अहमद मोहसिन के लिए गेंद को खेल दिया है ऑन साइड की जानिब और गेंद गोली की मानंद बॉडी लाइन को छू गई 4 रन के लिए। मोहसिन के बल्ले से आने वाला यह चौका और इन 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65, एक विकेट के नुकसान पर 65 हो चुका है मजमूई स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। मोहसिन सिर्फ 3 गेंदों का सामना किया और 14 रन पर खेल रहे हैं। अगली गेंद हिलाल अहमद की, ऑफ स्टंप से बाहर, बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा, दबाव सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है गेंदबाज हिलाल अहमद पर। जैसा मैंने पहले ही जिक्र किया कि यहां फील्ड रिस्ट्रिक्शंस के ओवर्स का खेल चल रहा है, तो ऐसे में स्पिनर का इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कि सही है, लेकिन देखना होगा हिलाल अहमद जो है बकिया 3 गेंदें किस तरह के से फेंकेंगे। अभी तक इस ओवर से कुल मिलाकर 7 रन आए हैं 3 गेंदों पर, 66 स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। मोहसिन हिलाल की गेंद का सामना करेंगे, ऑप्शन से बाहर, गेंद को खेल दिया है लेकिन फील्डर मौजूद पॉइंट पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। हिलाल अहमद सामना करेंगे उनकी गेंद का मोहसिन भट्ट, 14 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मोहसिन। हिलाल अहमद की गेंद का सामना करेंगे, 66 स्कोर हो चुका है। गेंद की इस मतलब ऑन साइड की तरफ गेंद को खेल दिया, फाइन लेग खाली और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। 70 स्कोर बढ़ता हुआ एक विकेट के नुकसान पर और 5वें ओवर का खेल जारी। हिलाल अहमद ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे। इस ओवर से अभी तक 11 रन आए हैं। हिलाल अहमद ओवर में आखिरी गेंद के साथ सामना करेंगे मोहसिन, जिन्होंने 18 रन बनाए हैं। बैकफुट पर गेंद को खेल दिया है, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओवर मुकम्मल, स्कोर 70, एक विकेट के नुकसान पर 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल। अभी भी 13 ओवर्स का आना बाकी है और कुल मिलाकर 74 रन चाहिए, जबकि 78 गेंदों का खेल बाकी। अब गेंदें कम और बल्कि गेंदें ज्यादा और रन कम, 74 रन चाहिए, 78 गेंदों का खेल बाकी है। वाडोरा स्पोर्ट्स के पास अभी भी 9 बल्लेबाज मौजूद और आबिद को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। लोन आबिद, जिन्होंने बल्लेबाजी में एक अच्छा काम निभाया अपनी टीम के लिए। अब देखना होगा गेंदबाजी में किस तरह से गेंदबाजी करेंगे लोन आबिद। आबिद हैदर सामना करेंगे उनकी गेंद का। हैदर के लिए गेंद को खेल दिया, हवा में शॉट, लेकिन महफूज और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से मैदान से बाहर 6 रन के लिए। यह छक्का आता हुआ हैदर के बल्ले से, पहला छक्का आने वाला हैदर के बल्ले से और स्कोर बढ़ता हुआ 76, एक विकेट के नुकसान पर। लोन आबिद बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार, अपने साथी खिलाड़ी जो है उन्हें कुछ सलाह मशवरा देते हुए अब देखना होगा किस तरह से यहां से गेंदबाजी करेंगे लोन आबिद। मजमूई स्कोर है वाडोरा स्पोर्ट्स का 76, एक विकेट के नुकसान पर। लोन आबिद छोटे से रनअप के साथ अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की बैक फुट पर गेंद को कट किया लेकिन फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। अब मोहसिन स्ट्राइक पर आए हैं, मोहसिन जिन्होंने सिर्फ यहां पर 7 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाए हैं और सामना करेंगे आबिद की गेंद का। लोन आबिद बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार, मोहसिन सामना करेंगे उनकी गेंद का। लोन आबिद ओवर द विकेट, मोहसिन के लिए गेंद की बैक फुट पर गेंद को खेल दिया है, फील्डर मौजूद मिड ऑफ बाउंड्री पर। हिलाल अहमद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 6ठे ओवर का खेल जारी है, 77 स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब का। अगली गेंद ऑप्शन से बाहर, गेंद को खेल दिया है, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद 2 फील्डरों के दरमियान से होती हुई सीधे पॉइंट बाउंड्री को छूती हुई 4 रन के लिए। मोहसिन के बल्ले से आने वाला यह चौका और इन 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81 हो चुका है। 6ठे ओवर का खेल जारी, 81 हो चुका है स्कोर। आबिद अगली गेंद के साथ, गेंद की एक मरतबा फिर मोहसिन के लिए, इस मरतबा पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, पॉइंट से फील्डर आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 13 गेंदों पर 32 रन की शराकत दारी हुई है मोहसिन और हैदर के दरमियान। 81 स्कोर, 6ठे ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे आबिद।
बैकफुट पर गेंद को खेल दिया, रन बनाने का एक मतलब, फिर कोई मौका नहीं तो 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 81 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर्स का आना अभी भी बाकी और 63 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। The Vadura Sports Club cruising along in this chase of 144, and it looks like it's going to be an easy task for them. The way the batters are coming hard at the bowlers, you can see power play done and nearly 14 runs per over. 81 for the loss of one, or just ultimately turns out to be a one-sided game. Then it's going a one-way traffic for Vadura Sports Club. They didn't let the side of Shala Sports Pansla to come into the game. If we get those session by session play, first power play was won by the bowling side. When they were bowling, they got 3 or 4 wickets. Then after that, at the regular intervals, at the regular stages of the game, at times they continued to pick up wickets and restricted them under 150. And once again, first ball of Hilal, he has been greeted with a 6. And we have seen in this chase of Vadura Sports Club, they are just dealing in 6s and 4s. They are knowing just one way, hitting the ball out of the ground continuously on numerous occasions. And they are driving the chase nicely, cruising along. And in just 6 overs, they have made this game a one-sided encounter. It's 87 for 1 now. They need 57 to win of 71 bowlers. It's less than run a ball with 9 wickets in hand. It has been a cakewalk for them, or we can say the batters are having a piece of cake here. It's a cherry on the cake for the batter. Hilal goes again, as this has been defended back to the bowler. There is no addition to the total at all. Shala Sports Pansla failing to limit the scoring opportunities or failing to put brakes on the scoring rate of Vadura Sports Club. Next ball, and again gets trying to work him on the onside. Even though Zakir Ashraf started in a very dangerous note, he was looking so dangerous, but Maruf getting rid of him. But now both these two batters are stitching a fine little partnership for the team, or a good partnership for the team here, and which is putting Vadura Sports Club into a commanding position. The way they're driving the game, they have been dominant with the bat today, unleashing the batting power and playing fearless and bold cricket, and putting the side of Shala Sports Pansla under serious pressure. And once again, mid-off inside the ring he goes, over his head, and couple of bounces into the boundary ropes for 4. Fetches him a boundary, and the bowler was trying to be over smart, bowling it right into the hitting zone of the batter. Very full delivery with mid-off up. You're asking for trouble. You cannot bowl too full when you got mid-off up and mid-on up as well. Easy pickings for the batter. He goes down over that fielder's head and into the fence for 4. Next one is a good delivery, as he was trying to work him on the onside. Overthrows, goes down towards the long on. They were trying to sneak that single, but it wasn't available. We'll have to stay happy with the dot. 7 overs, 91 for the loss of 1. Just 53 away, and Vadura Sports Club will seal through. They will be over the line, and they will be into the next knockout stage. And the side of Shala Sports Pansla, if they don't win this, they will be knocked out of the game. And a knockout stage of the game, or you can say it's a knockout tournament. Each and every game is important to you, crucial to you. So you'll have to try to get on to those winning ways. But unfortunately, today Shala Sports Pansla, be it their batting department or be it their bowling department, they looked off colour. First fresh over now, and you see first ball is down the leg side. It's a wavered or a terrible delivery, that is, to start with. A new bowler introduced, Naeem, and he bowls a wide, and wicketkeeper fails to gather it, and will be 5 wides. 95, just 49 away. What a chase this has been from Vadura Sports Club, and once again he gets it away and the ball dribbles away into the fence for 4. Not learning the lessons. You can see the bowling department is looking off colour. No discipline at all.
spraying it way down the leg side, spraying it way outside off, giving ample chance for the batters to get those boundaries. Once again he goes to Mohsin, down the leg, he whips him away on the onside. 3 deliveries and all of them have been way down the leg side. You can see the bowler failing to get onto the right track, and he fails to bowl onto that off stump line or to that 4th or 5th stump line. He can trouble the batter. These are easy pickings for the batter there. It's 100 for the loss of 1 now, 44 away from a victory. As the next delivery, this is batter line, and this has been dapped away for a single. Nice batting this is, excellent batting. It's pressure free, just maneuvering the ball, milking it into the gaps, getting those out boundaries, singles as well. High class batting this is. Over number 8, already 100 on board, and a one-sided encounter we're witnessing. A next ball has been guided, a misfield there, a fumble there by the fielder, and both the batters will cross for a single, even though there was a slight misunderstanding between the two, a slight miscommunication, but finally they make it back into the crease and will get a single. Winning over number 8, 102, just 42 away. Next ball, and cuts away down to third man boundary for 4. We have witnessed a lot of story this today. Just boundaries, just 4s and 6s here at Dandusa. And Shala Sports, the bowlers having no answers, looking clueless, helpless at this stage of the game. We can say they have the shoulders are down, as they know that we're not going to win the game, and they're letting the game to slip away out of their hands. Another skipper to continue first ball, and Mohsin trying to go big. He's in a hurry to finish the game. He wants to finish it as soon as possible, and this time no connection with the ball. 38 away, and plenty of balls to do the job. So short delivery, and he hammers him away and way back into the orchards. The ball has gone. Short delivery again down the leg side. He picks the length quite quickly. He was able to judge the length of the ball off the back foot, and he sends the ball flying away, and it rolls away into the square leg boundary for 6. Towering 6 that was. We can say a skyrocket from the bat of Mohsin, but he is 38 of just 17, looking dangerous, and this will be a boundary again. Wicket keeper fumbles this time, and he lets the ball, even though he had gloves on, but he lets the ball to go through his hands and into the boundary for 4. Nothing going right for Shala Sports Spanzla. Nothing going right in their favour at this moment. Bleeding runs at the will. Gun batting lineup of Vadodara Sports Club making mockery of this. Go and fetch this ball. This has been smoked away and into the boundary for 6. And Mohsin looking so dangerous here. A full toss ball, asking for trouble, and this has gone once again miles into the boundary for 6. He moves on to 44, just 1 hit away to get to his personal milestone, a half century. Will he get there in style? He just works him on the onside, down to long on. Clever cricket this is. There will be a single, and score moves on to 123 for 1. He moves on to 45 of just 20 balls, and still 1 ball to go, and they need 21 to win. Next one, and he works him on the onside. There will be a single, no chance of 2 at all. So Mohsin is not going to retain the strike. 9 overs gone, 124 for 1, just 20 away. They still have 54 ballers left. शुक्रिया फिरदौस। 9 ओवर्स का खेल हो चुका है, 124 स्कोर। एक कहा जाएगा कि मुस्तहकम पोजीशन इस मुकाबले में वाडोरा स्पोर्ट्स की, और बिल्कुल जीत के करीब। यहाँ जीत के लिए दरकार सिर्फ 20 रन और 48 गेंदों का खेल बाकी। 48 गेंदों का खेल बाकी है और 20 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए वाडोरा स्पोर्ट्स को, और मोहसिन को चाहिए 1 स्ट्रोक अपनी
निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। 45 रन पर खेल रहे हैं। 20 गेंदों का सामना किया मोहसिन ने और बॉलिंग मार्क पर डार बासित सामना करेंगे हैदर। हैदर के लिए ऑफ स्टंप से बाहर थोड़ी बहुत जो है उछाल लेती हुई और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कुल मिलाकर कहा जाएगा कि शाला स्पोर्ट्स पांचला की टीम जो है वो इस मुकाबले में पिछड़ रही है और अब अगली गेंद के साथ बासित गेंद के हैदर के लिए रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर मोहसिन ने और क्रीज में महफूज हैदर। 28 रन पर बल्लेबाजी कर रहे 21 गेंदों का सामना किया हैदर ने और सामना करेंगे बासित की गेंद का। बासित बॉलिंग मार्क से अगली गेंद के साथ हैदर के लिए ऑफ स्टंप से बाहर उछाल लेती हुई सीधे गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और डॉट गेंद। यह 10वें ओवर का खेल जारी है। इसके बाद मजीद 8 ओवर्स का खेल आना बाकी। कुल मिलाकर अभी भी 51 गेंदें हैं और 20 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अगली गेंद और इस मरतबा हैदर के बल्ले से आने वाला स्ट्रोक जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका। मोहसिन आए हैं अब स्ट्राइक पर। मोहसिन बट को चाहिए एक स्ट्रोक अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। 20 गेंदों का सामना किया और 45 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मोहसिन। बासित दार की गेंद का सामना करेंगे। बासित मोहसिन के लिए अच्छी गेंद पूरी तरह से बल्लेबाज मोहसिन को बीट किया और गेंद बल्ले के करीब से होती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 125 मजमूई स्कोर। अभी भी मुकाबला जीतने के लिए 19 रन दरकार वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब को। बैकफुट पर गेंद को खेला, रन लेना चाहते थे। अब देखना होगा मिड ऑफ से फील्डर आए, रन बनाने का मौका नहीं। वापस अपनी क्रीज तक पहुंचने में कामयाब मोहसिन बट। एम इकबाल हमारे साथ बाकीपुरा से जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एम इकबाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे रेगुलर व्यूअर। और अब ओवर मुकम्मल होता हुआ बासित का कुल मिलाकर 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल। वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब का स्कोर 125 एक विकेट के नुकसान पर और जीत के लिए दरकार 19 रन 48 गेंदों का खेल बाकी है। बिल्कुल एकतरफा मुकाबला साबित होता हुआ वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब के लिए और शाला स्पोर्ट्स क्लब की टीम इस मुकाबले में काफी जो है कहा जाएगा पिछड़ रही है। अगली गेंद 11वें ओवर की मारूफ। 11वें ओवर की पहली गेंद के साथ कदमों का इस्तेमाल किया था हैदर ने लेकिन गेंद की पिच तक पहुंच नहीं पाए और गेंदबाज ने भी थोड़ा वाइड फेंका गेंद को और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 125 19 रन चाहिए, 47 गेंदों का खेल बाकी। ये पारी का 11वां ओवर जारी है और 11वें ओवर में मारूफ है बॉलिंग मार्क पर। मारूफ अगली गेंद के साथ गेंद की इस मतलब थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। हैदर ने कुल मिलाकर जो है 29 रन बनाए और 25 गेंदों का सामना किया हैदर ने, जबकि मोहसिन जो नॉन स्ट्राइक एंड पर है उन्होंने कुल मिलाकर जो है 45 रन बनाए 22 गेंदों का सामना करते हुए। उमर अहमद हमारे साथ पांचला विन लिख रहे हैं लेकिन मुश्किल है पांचला के लिए क्योंकि सिर्फ यहां पर 19 रन चाहिए, 46 गेंदों का खेल बाकी है और अभी भी कुल मिलाकर 9 विकेटें वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब के पास। मारूफ बॉलिंग मार्क पर है और सामना करेंगे उनकी गेंद का हैदर। हैदर ने 29 रन बनाए 25 गेंदों का सामना करते हुए। सिराजुद्दीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ दूसरी पारी में जुड़ने के लिए। अगली गेंद के साथ मारूफ हैदर के लिए गेंद की और बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स में आती हुई 4 रन के लिए। सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स में आती हुई गेंद 4 रन के लिए और 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 129 हो चुका है। 129 हो चुका है मजमूई स्कोर वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब का और जीत के लिए दरकार 144 रन। कुल मिलाकर 16 बल्कि 15 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब को। हैदर 33 रन पर खेल रहे हैं, एक मरतबा फिर सामना करेंगे और इस मरतबा हवा में खेला गया स्ट्रोक, विकेट कीपर गेंद के नीचे जा रहे हैं। देखना होगा कॉट एंड बोल्ड करते हुए वहां पर मारूफ और मारूफ के खाते में जाने वाली ये विकेट। मारूफ के खाते में काफी ज्यादा ऊंचा शॉट खेला था हैदर ने और मारूफ गए वहां पर गेंदबाज, उन्होंने एक आसान सा कैच लेकर
हैदर की इनिंग का खात्मा किया। तो हैदर आउट होने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। यहां पर प्रिंस आगा हमारे साथ जुड़े हैं। आप जेके स्पोर्ट्स प्लस के ओनर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर वाडोरा स्पोर्ट्स का स्कोर है 129। 2 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 15 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, जबकि अभी भी कुल मिलाकर जो है 44 गेंदों का खेल बाकी है। 44 गेंदों का खेल बाकी है वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब के पास, और सिर्फ उन्हें जीत के लिए दरकार 15 रन। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात में हमारा साथ निभाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा, नए बल्लेबाज आए हैं शाहिद खान। शाहिद खान आए हैं नए बल्लेबाज, सामना करेंगे मारूफ की गेंद का। मारूफ ओवर में चौथी गेंद के साथ शाहिद खान के लिए, जो अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और शाहिद खान जो है सामना करेंगे मारूफ की गेंद का। मारूफ छोटे से रनअप के साथ, गालिबन रनअप में कुछ उन्हें जो है गड़बड़ सा महसूस हुआ और गेंद डिलीवर नहीं की। अब वापस अपने बॉलिंग मार्क की जानिब जाते हुए मारूफ अगली गेंद के साथ, सामने है शाहिद खान। गेंद के ऑप्शन से बाहर, बल्ला जोरदार अंदाज से घुमाया था, लेकिन अपनी जगह खड़े और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। शाहिद खान एक मतबा फिर जो है सामना करेंगे मारूफ की गेंद का। मारूफ ओवर में आखिरी गेंद के साथ 11वें ओवर का खेल जारी है। 15 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब को, और कुल मिलाकर 43 गेंदों का खेल बाकी। एकतरफा मुकाबला, और इस मरतबा पैड से टकराई गेंद, ओवर मुकम्मल होता हुआ कुल मिलाकर 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 129 स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर वाडोरा स्पोर्ट्स क्लब का, और जीत के लिए दरकार 15 रन। गेंदें बाकी है 42। With 42 bowlers left, they need 14 or 15 runs to win the game. A wicket against a run-up play for Shala Sports Spanzla. They got rid of Haider there, but Mohsin is still batting on 45, just one stroke away to get to his half century. As Basit Dar will continue. Over number 12 in progress with the first ball. Mohsin carefully watches the line of the ball and he lets it pass through, goes into the gloves of wicketkeeper. 129 for 2. As I thought 150, 160 will be a competitive score. It will be enough for them, but they have proven me wrong today. They didn't bowl well against the likes of the batters of Vadodara Sports Club, and this has been pulled away in style, and this will go to the distance as well. Another 6 for Mohsin, but banks that one shot, and he was right up to the challenge, and he sends the ball into the stands for 6. Gets to his half century in style. 6, and he moves up to 51, and now they need 9 to win the game. And from the very beginning of the chase, it looked like one-sided game. The way the bowlers leaked runs at will, they were not able to impose that pressure on the batting unit. They're continuously leaking runs, and once again trying to drive the ball, gets it off the outside edge down to third man, a single there, and he'll be at the non-strikers end on 52. 136 for the loss of 2, and this has been an incredible chase from Vadodara Sports Club, chasing 144, and Shala Sports Spanzla wasn't their day with the ball today against this batting lineup, and it was first to Zakir Ashraf, who was having fun with the bat, smashed at least 30 odd runs of just 12 or 13 bowlers. And after his wicket, then came Mohsin, who came all guns blazing. He was taking attack on the batters, and they had no clues at all. And next ball, he watches it carefully and pushes it down to coverage, and there is no addition to the total. 136 for the loss of 2 after 11.5. Mohsin 52, Shahid Khan yet to get off the mark. A win here means that Vadodara Sports Club will go through to the next knockout game, and this has been driven crisply, good looking shot. In the meantime, he will fetch a single
and will retain the strike as well. Just 7 away, 8 away from a victory. As I said that, unfortunately, Shala Sports Spanzla, it will be end of journey for them here in this Dendusa Premier League. They will be out of this tournament. And, see, they didn't bat well. Kept losing wickets in the first game and have no answers in those death overs. And last 2 overs fetching just 16 or 17 runs with 3 or 4 wickets, 3 wickets as well. That is where Vadodara Sports Club pull things back. But still, I believe that 160 couldn't have been enough for them. The bowlers needed to step up. You had runs 144, needed to show up some fight, but unfortunately it didn't happen today. The batting has been absolutely spot on. As he faces the first ball on the onside, he works him away and will get a single. 137 for the loss of 2, and they're closing in onto the victory, cruising along quite easily. This has been a one-way traffic for them, a one-sided game. The way they have chased things down. See, those signs for upcoming teams that Vadodara Sports Club are making a statement here. The way they bowled it today, even though the fielding was a bit of a concern for them. Their fielding department let them down, but still they managed to restrict to the team. And that is one weak link or a loophole I was able to find in that club of Vadodara Sports Club. But in the coming matches, they will be definitely trying to get those negatives out of the game and bring those positive things into the field and get that positive energy into the field. This has been driven on the up and over the fielder's head, straight into the boundary for 4. Pitched up and mid-off inside the ring. And he goes aerial. Needs no sighters or second invitation for that. Deliberately played in the air. And once you clear the fielder inside the ring, it's always going down to the boundary. It's 142, just 2 away. Can Mohsin hit those winning runs? And he waits for the ball to come. Defender sit back to the ball. It was trying to steal a quick single to level the scores, but not meant to be. The bowler was very quick to get up to the ball. He swooped onto the ball and denies any chance of a single. Still 2 away. And it's 142. Mohsin has played a blinder of an innings. 57 of just 28 bowlers. Heads down and shoulders down of Shala Sports Spanzla. Not living up to the expectations. They're a good side, but wasn't their day today. And this one, he pushes him down to covers. Middles it well, times it well. You've seen the hallmark of the batting of Mohsin, but he has been continuously watching the ball till the last moment. Doesn't try to rush, or he doesn't seem to be in a hurry. He just waits for the ball. Final ball coming up 2 to win. Can he finish it? It is outside the off-stump and he finishes it in style as well. And he cuts it upishly and it goes into the stands for 6. Finishes the game with a 6 remains, not out on 63. And that means Vadodara Sports Club are through into the next round. And Shala Sports Spanzla are out of the tournament. It has been a quality display of chase by Vadodara Sports Club. Many congratulations for them, and hard luck for Vadodara, hard luck for Shala Sports Spanzla. Wasn't you a day? And these are the live visuals, live scenes you witnessed on Global News Network from this majestic cricket field of Dendusa. This is it for the day. A couple of days later, that is on Tuesday, going to witness the finals of Police Martyrs Cricket Tournament, which was being played at the sports field of MET Sopore. You'll be watching this game a couple of days later on Tuesday on Global News Network. Until then, it's goodbye from our side.